Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. This is for mathematics, class 3rd, chapter 2, fractions. This is our lecture number 6. Topics to be covered. बेटा आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? सी comparison of fractions, exercise 2D, page 25. Clear? Now beta, our next topic is comparison of fractions. Number 1, when the numerator is same, then the fractional number that has smaller denominator is greater. Are you getting my point? जब बेटा न्यूमरेटर सेम होता है, then fractional number that has smaller denominator, fractional number का जो smaller denominator है ना, वो क्या होगा? बड़ा होगा. Okay? See here 1/2 box 1/3. See here numerators are same. दोनों में 1 है. दोनों का न्यूमरेटर सेम है. 1/2 में भी न्यूमरेटर 1 है. 1/3 में भी न्यूमरेटर 1 है. ओके, सो बोथ आर सेम. न्यूमरेटर इज सेम. ओके, तो जो इसका स्मॉलर डिनोमिनेटर है, मीन्स ये 2 आपका क्या है? 1/2 में 2 इज डिनोमिनेटर, 1/3 में 3 इज ऑल्सो डिनोमिनेटर. तो इसमें स्मॉलर डिनोमिनेटर क्या है? 2. तो हम यहां पर कौन सा साइन लगाएंगे? ग्रेटर देन साइन. हियर we will put greater than sign here. Okay, clear? Now comparison of fractions number 2. When the denominator is same, then the fractional number that has greater numerator is greater. अगर बेटा डिनोमिनेटर सेम है तो फ्रैक्शनल नंबर में बड़ा न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होगा. ग्रेटर न्यूमरेटर ही बड़ा होगा. क्लियर? सी here in 3/4, 3 is our numerator, 4 is our denominator. In 2/4, 2 is our numerator, 4 is our denominator. As I told you, when the denominator is same, देखो denominator same है, दोनों में denominator 4 है, both are same. तो फ्रैक्शनल नंबर में जो ग्रेटर न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा. वहां पर हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे बड़े न्यूमरेटर की तरफ. क्लियर? हियर ग्रेटर न्यूमरेटर इज 3. 3 बड़ा है, 2 छोटा है, सो वी विल पुट ग्रेटर देन साइन हियर. क्लियर? नाउ we will solve exercise 2D, question number 3. हम exercise 2 का question number 3 solve करेंगे here in the book. Question number 3, arrange the following in ascending order. Part A,
In part A, beta, given fractional numbers are 2 upon 5, comma, 2 upon 8, comma, 2 upon 7, comma, 2 upon 10, comma, 2 upon 3. See here, beta, we have to arrange these fractional numbers in ascending order here. आपको यहाँ पर इन फ्रैक्शनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. Okay, beta, before solving this part, I just want to tell you meaning of ascending order. कि ascending order क्या होता है? Beta, when we arrange the numbers from smaller to greater in order, that order is called ascending order. See here in part A, beta, numerator is the same of all fractional numbers. See here 2 is given, here also 2 is given, here 2 is given, here 2 is given, at last here also 2 is given. So numerator is the same. As I told you, beta, here in the previous topic, when the numerator is same, then the fractional number that has the smaller denominator is greater. So according to the rule, we will write here. सबसे पहले हम यहाँ पर कौन सा नंबर लिखेंगे, कौन सा फ्रैक्शनल नंबर लिखेंगे? That is 2 upon 10. See, we will write here 2 upon 10. Clear? Then you have to put less than sign and next number will be 2 upon 8. See, less than sign, then 2 upon 8. After that, you have to write 2 upon 7. पहले आप लेस देन का साइन लगाओगे, then you will write 2 upon 7. And next number will be 2 upon 5. You have to put a less than sign, then you will write 2 upon 5. At last you have to write 2 upon 3. पहले आप लेस देन का साइन लगाओगे, then you will write 2 upon 3. Understood? Now beta, we will solve part B. अब हम part B solve करेंगे. Here in part B, given fractional numbers are 2 upon 6, 4 upon 6, 1 upon 6, 5 upon 6, 3 upon 6. बेटा, अब आपको इन गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स को जो पार्ट बी के हैं, आपको इनको क्या करना है? यू हैव टू अरेंज दीज फ्रैक्शनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. हियर, यहां पर आप इनको अरेंज करके लिखोगे असेंडिंग ऑर्डर में. क्लियर बेटा? नाउ बेटा, एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने ए पार्ट में भी आपको बताया है, अब बी में भी मैं आपको बता रही हूं. एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम, then the fractional numbers that has greater numerator is greater. Clear beta? See here, denominator is same. In this fractional number, in 2 upon 6 denominator is 6, in 4 upon 6 denominator is 6, 1 upon 6 denominator is 6, 5 upon 6 denominator is 6, and in 3 upon 6 denominator is 6. Denominator is same. So the fractional number that has greater numerator is greater. Clear?
Now we will arrange them in ascending order. So first of all, we will write here 1 upon 6. See, 1 upon 6. Then you have to put less than sign 2 upon 6. Okay, and next number will be 3 upon 6. First of all, you have to put a less than sign. Less than sign, then 3 upon 6. After that, you have to write 4 upon 6. First of all, you have to put a less than sign, then the fractional number 4 upon 6. At last, we have to write 5 upon 6. पहले आप लेस देन का साइन लगाओगे, then you will write 5 upon 6. Clear? Understood, beta? Very good. Now, we will solve exercise 2D. Question number 4. Arrange the following in descending order. Part A. In part A, beta, given fractional numbers are 1 upon 5, 4 upon 5, 2 upon 5, 3 upon 5, 5 upon 5. Beta, here these fractional numbers are given and you have to arrange these fractional numbers in part A in descending order. क्वेश्चन 3 में आपने फ्रैक्शनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था और अब आप किस में अरेंज करोगे बेटा? इन फ्रैक्शनल नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में. ओके, so beta, before solving this part A, I just want to tell you meaning of descending order. कि descending order क्या होता है? Beta, when we arrange the numbers from greater to smaller in order, that order is called descending order. Okay, beta? See here, in part A, in the given fractional numbers, denominators are same. See, in 1 upon 5, denominator is 5. In 4 upon 5, denominator is 5. In 2 upon 5, denominator is 5. In 3 upon 5, denominator is 5. And in 5 upon 5, denominator is also 5. But according to the rule, when the denominator is same, then the fractional number that has greater numerator is greater. Okay, beta? So, first of all, we will write here 5 upon 5. Okay, then you have to put greater than sign. Then, which number you will write? 4 upon 5. Greater than sign, then 4 upon 5. And next, what will you write here? Next number will be, you have to put greater than sign, and next number will be 3 upon 5. Greater than sign, 3 upon 5. After that, after 3 upon 5, you have to put here greater than sign, and next number will be 2 upon 5. At last, here you have to put greater than sign, and last number will be 1 upon 5. Clear? Now we will solve part B. अब हम part B solve करेंगे. See, given fractional numbers are 3 upon 10, 1 upon 10, 4 upon 10, 2 upon 10, 7 upon 10. Beta,
you have to arrange these fractional numbers in descending order. Okay, see here in these given fractional numbers, denominators are same. In 3 upon 10, denominator is 10. In 1 upon 10, denominator is 10. In 4 upon 10, denominator is 10. In 2 upon 10, denominator is 10. And in 7 upon 10, denominator is also 10. Beta, when the denominator is same, then the fractional number that has greater numerator is greater. Okay, so which number we will write here? हम जब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले कौन सा नंबर लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द रूल वी विल राइट हियर 7 upon 10. Okay, then you have to put greater than sign and next number will be 4 upon 10. Okay, after that what will you write here? 4 upon 10 के बाद आप क्या लिखोगे? You have to put greater than sign, then 3 upon 10. Okay, after that you have to put greater than sign and next number will be 2 upon 10. Okay, at last you will write 1 upon 10. पहले अब आप क्या करोगे? You have to put greater than sign, then number you will write here 1 upon 10. Understood? Clear beta? Now beta, today's homework is, आपका आज का homework है बेटा, you have to do question number 3. Arrange the following in ascending order. Part C. Given fractional numbers are 1 upon 10, 6 upon 10, 5 upon 10, 3 upon 10, 7 upon 10. आपने बेटा इन गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर बुक. आपको मैंने अभी ए और बी पार्ट क्लास वर्क में कराया है. देन यू हैव टू डू दिस सी पार्ट इन बुक. नाउ part D, you have to do D part also. Okay, in your math book. In part D, given fractional numbers are 5 upon 8, 5 upon 9, 5 upon 6, 5 upon 7, 5 upon 10. Okay, आपको part D को भी you have to arrange in ascending order. आपको इन फ्रैक्शनल नंबर्स को ascending order में arrange करना है and you have to do this work in your book. Clear? Now you have to do in homework question number 4. 4 भी करना है आपको. Arrange the following in descending order. आपको बुक में क्वेश्चन 4 भी होमवर्क में करना है. पार्ट सी, गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स आर 1 upon 7, 3 upon 7, 4 upon 7, 2 upon 7, 5 upon 7. आपको बेटा पार्ट सी में इस गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स को यू हैव टू अरेंज इन descending order. Okay, now part D. In part D, given fractional numbers are 3 upon 7, 3 upon 4, 3 upon 6, 3 upon 5, 3 upon 10. Part D में भी बेटा you have to arrange these given fractional numbers in descending order. Okay, बेटा क्वेश्चन 4 का भी
मैम ने पार्ट ए और बी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन क्लास वर्क, यू हैव डन इन योर मैथ्स बुक। ओके, आप पहले से ही क्लास वर्क में पार्ट ए और बी कर चुके हो क्वेश्चन 4 में। तो आप अब घर से इन होमवर्क यू हैव टू डू पार्ट सी एंड डी इन मैथ्स बुक। क्लियर? यू हैव टू डू होमवर्क केयरफुली। बहुत ध्यान से आपको होमवर्क करना है।